Hello, my friends. Today, my topic is what is a magnetic field? What is a magnetic field? Is unit. Then, the force experienced by a charged particle in a magnetic field. Okay, and then that's all. तो मेरे दोस्तों, मेरा आज का विषय होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना। और यदि एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल पता ही क्या होता है, चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, बस ये टॉपिक्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, सारी समझ आएगी। नहीं समझ आएगी तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू एंड लेट्स कम विद मी फॉर to understand what is a magnetic field and all. My dear friends, you know very well, if there is an electric field, uniform electric field means these lines are equally spaced. You know, these are the electrical lines. Electrical lines, they always points positive, some positive source to negative source. If there is a positive source, negative source, then there will be electric field like this, uniform field, positive to negative. Okay. Now, if there is some charge particle Q, it will experience a force because it is in the electric field. How much force it will experience? By definition of electric field, it will experience a force. Electric field, electric intensity is force per unit charge. So it will experience a force is equals to Q into E vector. And if the charge particle is positive, the charge particle will experience a force along the direction of the electric field. So whenever there is a charge in the field E, the charge will experience a force equals to QE. Okay, so now we are coming, so this is what is about the electric field. Now I am coming magnetic field. You know what is the reason of the magnetic field? Magnetic field is the reason. Magnetic field is always there if there is you are having a permanent magnet or you are having a current carrying conductor. Mean the origin of the magnetic field P. What is the origin of magnetic field P? What is the origin of the magnetic field P? Always remember, is a magnet, permanent magnet. Second, current carrying wire or any conductor or a loop. Mean whenever there is a current, there will be magnetic field, or there will be a field if there is a magnet. Okay. Now what about if there is a magnet, like I am having a magnet, north pole of the magnet, south pole of the magnet. As electric field was positive to negative, magnetic field always points north pole to south pole. Mean these are the lines of, these are the magnetic lines. Okay, north to south pole. So here magnetic field, it is also uniform, mean it is constant. Let me assume in this space it is constant. Now what happen if we having a charge Q here in the magnetic field P? Then
whether the charge particle will experience a force or not. तो मेरे कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो तो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, चाहे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, चाहे वो मूव कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। पर चार्ज पार्टिकल है तो उस पर एक फोर्स लगेगी लगेगी, क्यू ई के इक्वल। तो हम कह रहे हैं कि अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, तो मैग्नेटिक लाइंस होगी। अब इसमें चार्ज पार्टिकल आप रख देते हो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को नहीं लगेगी यदि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो। मीन इफ देयर इज अ चार्ज पार्टिकल, इट इज रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, it will not experience any force, no force it will experience. तो मैग्नेटिक फील्ड, यदि मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस, चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है ना, ये चार्ज पार्टिकल ये मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी है v, तो ये b की डायरेक्शन। तो व्हाट अबाउट, अब चार्ज पार्टिकल को लगेगी फोर्स? यस, अब लगेगी। चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी होना बहुत जरूरी है। तो फोर्स लगेगी कितनी है अब इसमें? अब ना हम क्या करते हैं कि इसका एक फॉर्मूला देते हैं आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगती है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यू कैन सी तो मैग्नीट्यूड जो रहेगा फोर्स का वो कितना रहेगा, क्यू वी पी साइन थीटा। मीन जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो डिपेंड करेगी कि वेलोसिटी है कि नहीं है। यदि वेलोसिटी ना हुई, मतलब ये वी वेक्टर ना हुआ, मतलब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो फोर्स नहीं लगेगी। दूसरा, यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बी नहीं है, तब भी फोर्स नहीं लगेगी। चार्ज पार्टिकल नहीं है, है ना, नहीं का मतलब न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, उस पर भी फोर्स नहीं लगेगी। हाँ, फोर्स लगेगी, थीटा होना चाहिए, है ना। फिर आप कहोगे कि थीटा कितना होना चाहिए? देखो, यदि तो थीटा हो गया 0, मीन चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। यदि थीटा 0 हो गया तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगी, फिर भी नहीं लगेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 वेक्टर हो जाएगी कब? यदि चार्ज पार्टिकल मूव भी कर रहा है, पर मूव कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मीन इफ देयर इज चार्ज पार्टिकल, इट इज मूविंग along the direction of magnetic field, it will not experience any force. Then your question may be, when it experiences a maximum force, what should be theta? Yes, theta should be 90 degree. Then sin 90 becomes maximum. How much? 1. Then charge particle will experience a force QVP. This is the maximum force experienced by charge particle. Okay, mean if this is a magnetic field, okay, this is a magnetic field and charge particle is moving along this direction. So, you know, this is B. So if angle between B and B is 90, then it will experience a maximum force. Okay. So it will experience, charge particle will experience maximum force in magnitude QVP if the charge particle is moving, you know, perpendicular to the B direction. Now coming to the figure given in your book, that this is a magnetic field. Charge particle is moving like this. Mean this is X direction, this is Y direction. This is a plane, X or Y plane, like your paper, okay, your copy, okay. And Z direction, this direction is, you know, this direction is like
Z direction is like this, perpendicular. This is a Z direction outward towards U, and this is our Y, this is our X. Actually it is like, the diagram is like this. This is Y, this is X, and this is Z. So charge particle is moving in the XOY plane, right? Now because there is an angle theta with velocity and magnetic field, charge particle will experience a force. Now here V is broken into two components, V cos theta along this angle theta. So along this side V cos theta, and along this side perpendicular component is V sin theta. So V cos theta will not experience any force in P because V cos theta is along B. V sin theta will experience maximum force because it is at 90 degree to B. This is 90 degree to B. So this is Z direction, the direction of the force. So our formula is QVP sin theta, okay, and QVP sin theta. So force depends upon velocity, magnetic field and theta. So what is a Fleming left hand rule? Very simple. This is my right hand, this is my left hand. Stretch 90 degree, this finger, thumb. This angle is 90, this angle is 90, okay? This is my left hand. Then always remember, this finger will point towards magnetic field. This finger will point the motion of positive charge particle. Remember, positive, not electron. According to this rule, the direction of positive charge particle. So if there is a magnetic field, there is a charge particle which is positive and it is moving along this direction, then this charge particle which is moving along this direction, it will experience a force along the thumb. Mean the charge particle is moving like this and it is in a magnetic field which is along this direction. Then this charge particle which is moving along this direction, it will experience a force. It will experience a force along this direction. A question comes in your mind, what happens if the charge particle is negative? Okay, if charge particle is negative, then the charge particle is moving along this direction, negative charge particle. It will also experience a force, but not along this side, but exactly 180 degree opposite to the direction of the thumb, mean along this direction. Mean if it is an electron, this is a magnetic field, electron is moving along this direction, then left hand points the direction of force along the thumb. But because the charge particle is negative, so direction of force will not be along this direction, but exactly 180 degree opposite, mean along this direction, downwards. Okay. Of course, if negative particle, charge particle is moving along this direction, okay, then it is equivalent that the positive is moving along this side, then the force will be along the thumb. Mean if the electron, they are moving along this direction and this is the direction of magnetic field, the electron will experience a force along the thumb. So remember the left hand rule, right? And sometimes we use the right hand thumb rule. You curl your fingers according to the direction of the vectors, then the thumb points the direction of the force. Okay. Curl your fingers accordingly you're talking about the vectors. Okay, curl your finger and thumb shows the direction.
Now I'm coming the Fleming left hand rule. Okay, you stretch the finger. Okay, stretch the first finger, the center finger, and the thumb. 90 degree. This is 90, this is 90. This finger will point the direction of the magnetic field always. This direction will point the direction of motion of the positive particle. Force will point the direction of the force. The thumb will point the direction of the force. Now look. You can apply the right hand thumb rule also. So this is my right hand. Okay, this is V, this is P. The particle is positive. Okay, and where B, they are in a plane. You curl your fingers like this. Curl your fingers mean V to P. And then the thumb will show the direction of the thumb will be point upward towards the reader. So this will be the direction of the force. Now if the charge particle is negative, now for negative the force comes downwards. Okay, because charge particle is negative. So this is clear. Now I am coming the unit of magnetic field. Very simple, because F equals to QVB sine theta. Okay. Now from here you find the value of B. B becomes F upon QV sine theta. Now let our charge particle is 1 coulomb. It is moving with 1 meter per second velocity and moving at right angle to the magnetic field, theta 90, sine 91. Then how much the force will become? Because this is 1, this is 1, this is 1. Okay. Okay. And sine theta becomes equals to 1. And if now I'm saying if for 1 coulomb charge 1 meter per second at 90 degree, if it experience 1 Newton force, okay, then P will be equals to 1 Tesla. Okay, then P will be equals to 1 Tesla. Again, charge is 1 coulomb, velocity 1 meter per second, theta 90. So if 1 coulomb charge is moving with 1 meter per second perpendicular to the magnetic field, now if it experience a force 1 Newton, if then B is said to be 1, because this is 1 Tesla. So this is the definition of Tesla. ठीक है, तो मैं हिंदी में बता देता हूँ कि आपके पास एक कूलम चार्ज है, 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, 90 पे मूव कर रहा है, तो यदि उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगती है तो आप पता क्या कहोगे कि फील्ड मेरी ना 1 टेस्ला है, बस। ठीक है जी। तो आगे ये फोर्स न्यूटन में होती है, चार्ज कूलम में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, थीटा को तो कोई यूनिट होता नहीं है ना, तो ये इसके यूनिट बन जाएंगे। तो ऐसे आपको ना इसके डायमेंशंस भी बनाने हैं, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम कि इसके डायमेंशन बताओ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो आप कर सकते हो, वेरी इजी। मास दिया हुआ है ना, चार्ज 2e है, तो क्या होगा आपके पास अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज ट्वाइस द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, तो डबल कर लेना इलेक्ट्रॉन चार्ज से। उसकी वेलोसिटी दे रखी है
मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और ये तय हुआ है कि वो 90 डिग्री पे जा रहा है, तो कितनी फोर्स लगेगी? वेरी सिंपल, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपको फोर्स मिल जाएगी। तो इतनी फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स से उसको कितना एक्सेलरेट कितना होगा, न्यूटन का दूसरा ला लगाओ, फोर्स बाय मास, फोर्स आप कैलकुलेट कर चुके हो, मास से डिवाइड करो, तो एक्सेलरेशन, ये गलत है, यूनिट होंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इतना उस पर उसको वो एक्सेलरेट होगा। ओके, थैंक यू।